सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक बिल्डर को एक बड़ा झटका दिया है। नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट में दो टावर्स, ट्विन टावर जो हैं वो इलीगल बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कंस्ट्रक्शन के दौरान कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। आज इसी पर बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी मैटर्स। आई एम शिल्पी टुटेजा। आज बात करेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि 3 महीने के अंदर अपनी कॉस्ट पर ही सुपरटेक बिल्डर को इन टावर्स को गिराना होगा और साथ ही बिल्डर को जो एपेक्स टावर के जो बायर्स हैं उनको 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे भी लौटाने होंगे। हमारे साथ जो बायर हैं यूबीएस तपतिया जी हैं, जो लंबे समय से आरडब्ल्यू में इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ जयंत भूषण जी भी हैं जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने ही इस फैसले के लिए जो है काफी लंबी लड़ाई लड़ी है। सबसे पहले तिबतिया जी के पास चलते हैं। तिबतिया जी, आपसे जानेंगे कि आखिरकार इस लड़ाई को आपने कैसे लड़ा है और अब जीत हासिल की है। जो आदेश अब आया है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये टावर जो हटाने की बात की जा रही है, थोड़ा सा हमें बताइए कि किस तरीके से टावर जो हटाए जाएंगे। It can be divided into 4 parts. One is the demolition of 2 twin towers, which have been built till now about 31 stories. Of course, these were to be built up to 40 stories. But since we had gone to the court in Allahabad High Court, and at that time it was only 13-14 stories when we had filed the case. But the builder continued to construct it day and night. And it completed up to 2014, it constructed 31 stories. So these 2 towers have to be demolished by the orders of Supreme Court. The journey has been very, very tough from all corners. At our age, we were mostly senior citizens, except one person involved in it, who is no more. We had to go to the Allahabad High Courts by sitting in a 3rd class without any reservations. Not once, many times it happened so. And we must have visited at least 25 to 30 times Allahabad High Court to attend the hearings. So it went on for 2 years, and ultimately, the God willing, that these orders will be issued in our favor. सबसे पहले समझेंगे कि आपने जो है ये पूरी लड़ाई लड़ी है। तकरीबन 1000 फ्लैट्स हैं जो इलीगल हैं, अब उनको तोड़ने के आदेश आए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास से। तो आप समझाइए कि क्या है ये पूरा का पूरा वर्डिक्ट। This case actually stems from Supertech making some 600 or something flats in this project and selling all the flats and showing the buyers certain common areas, some gardens, etc., on the basis of which they bought these flats. After that, when the FIR was increased, Supertech removed one garden and changed one building which had not yet been constructed, and instead planned these 2 huge towers, very long and very tall, 40 stories high, which completely blocked the light, the air, the safety, etc., of these residents. So first they tried to find out ki bhai, is this under some sanctioned plan? What is it that you are constructing? Supertech kept misleading them by saying ki no, this is on a separate plot of land, this has nothing to do with your project, this will have totally separate facilities, separate entry, exit, separate swimming pool, separate club, etc. So you people should not be bothered. When they wanted to see the sanctioned plan, Supertech did not give them the sanctioned plan. When they went to Noida to show them the sanctioned plan, Noida refused to give it. In fact, they asked Supertech, can we show the sanctioned plan? Supertech obviously said no, and therefore Noida refused to give the sanctioned plan. Ultimately, the residents had no option but to go to the High Court. So they filed this petition in 2012. Saying that, look, this construction is illegal on account of 2 reasons. Very tall new buildings were coming up just 9 meters away from that Tower 1, Aster 1 or whatever it is called, and therefore it violated the minimum distance criterion that based on the height of the building, it must be a certain amount of distance away. Now, based on the height of these buildings, it should have been about 20 meters away. Instead, it was built only 9 meters away. So they succeeded on both counts, both in the High Court.
when the judgment came in 2014 and now in the Supreme Court. ये जो बायर्स हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल से 2012 से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए थे, वहाँ पर भी जो है इन्होंने पूरा का पूरा लड़ाई को लड़ा है, तो वहाँ से जर्नी थोड़ी सी बताइए। Initially they filed complaints with the Noida authority. Of course, that bore no fruit because the Noida authority was in collusion with the builder. Then they filed police complaints, etc. They filed RTI applications asking for plans. Nothing bore fruit. Ultimately, they had to go to the High Court in Allahabad. यूपी अपार्टमेंट एक्ट क्या कहता है, हमें ये भी समझा दीजिए कि यूपी अपार्टमेंट एक्ट के तहत ये चीज़ें होनी चाहिए अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो। The 2010 Act is absolutely clear that once you have sold flats to buyers in any project, they get proportionate rights over the common areas. So, for instance, if there are 300 buyers, then each of them will get 1/300th right over the common areas. Now, if just because the FAR is increased and theoretically you can make more buildings, you cannot, without the consent of the original buyers, increase the number of buyers, thereby reducing their proportionate share in the common areas. Let us assume that you have kept aside some area for a building. Here, of course, they took a garden and converted it into a building. So, that was a direct reduction of common areas. सर, इसमें जो खर्चा आता है, अगर किसी तरीके का जो भी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन होता है उसमें जो खर्चा आता है वो कौन बेयर करता है? क्या RWO को देना होता है या फिर कोई रिलीफ जो है वो दिया जाता है कोर्ट की तरफ से? By giving them costs of 2 crores, the Residents Welfare Association has been given a cost of 2 crores, which will compensate them for the amount that they have spent and partly for the sort of mental harassment etc. that they have undergone. कोर्ट ने 3 महीने के अंदर जो है पैसा लौटाने की बात कही है और साथ में जो कंस्ट्रक्शन है उसे भी गिराने की बात कही है, तो इसमें क्या प्रोसेस रहेगा? That is to be done by the builder himself under the supervision of Noida authority as well as the CBRI Roorkee, which is an expert into in how a building can be demolished safely. So in 3 months they have to demolish it. आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा, लेकिन अगर आपके कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सजेशन है या फिर कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें हमें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा। इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मुझे ट्विटर पर, इंस्टा पर और साथ ही फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें, मैंने अपना हैंडल नीचे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी मैटर्स। कैमरामैन नितिन राजपूत के साथ शिल्पी डुडेजा, MBTV। Please subscribe to Magic Bricks on YouTube and click the bell icon to get new videos.